मैं tarina खातून आपका स्वागत करती हूँ योगा फीड्स में। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने एक नए सीरीज की जो है चेयर योगा की। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे टिल 6 वीक, 6 एपिसोड, ईच एपिसोड एवरी वीक एंड 10 मिनट ईच सेशन। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम पहले दिन की, जो रहेगा हमारा होल बॉडी एनर्जाइजिंग सीक्वेंस, और ये हर लेवल के प्रैक्टिशनर के लिए है। तो आपको किसी तरह की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे हर लेवल का प्रैक्टिशनर, जूनियर टू सीनियर, सबसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होल बॉडी एनर्जाइजिंग चेयर योगा के साथ। फर्स्ट बैठेंगे रिलैक्सिंग पोस्चर में, अपने कमर गर्दन को सीधे रखते हुए, डीप ब्रेथ के साथ लिफ्ट करते हुए शोल्डर को, एक्सहेलेशन के साथ जेंटली ड्रॉप करेंगे शोल्डर डाउन, आंखें बंद एंड रिलैक्स। अपने सारे ध्यान को अपने सांसों के ऊपर ले जाते हुए ऑब्जर्व करेंगे ब्रेथ, रिलैक्स करेंगे होल माइंड, होल बॉडी, प्रिपेयर करेंगे अपने माइंड को आज की प्रैक्टिस के लिए। धीरे से हेड ओपन करते हुए स्टार्ट करेंगे स्ट्रेच। सो ब्रीथ इनहेल के साथ दोनों पाँवों को साइड में खोलते हुए अपने हेड के बैक पर लेके जाएंगे, फिंगर्स को स्लाइडली क्लोज रखते हुए एक्सहेलेशन के साथ पहले जितनी देर हो सके एक्सहेलेशन में होल्ड रखना है अपनी ब्रेथ को। उसके बाद धीरे से स्लो एक्सहेलेशन करते हुए, क्योंकि इस पोस्चर में फील करेंगे बैक मसल्स की स्ट्रेचिंग को, रिलीज करेंगे और सारी स्टिफनेस को अपने बैक और गर्दन में की। साथ वापस आएंगे। याद रखिए जब भी कोई प्रैक्टिस करे ना हो सके अपने ब्रेथ को होल्ड रखें और उस पोस्चर में होल्ड रहने का अभ्यास करें। रोटेट करेंगे राइट हैंड को बैक में और लेफ्ट से आर्म को फिंगर्स लॉक करते हुए देन ट्विस्ट होंगे राइट साइड, ड्रॉप करेंगे चिन को राइट ट्विस्ट। वापस आते हुए रिपीट करेंगे अदर साइड। करते हुए लेते वापस रिलीज करेंगे पोस्चर को, रिलैक्स रखेंगे शोल्डर, दोनों हाथों को बैक जाते लेके जाते हुए फिंगर लॉक करना है अच्छे से। थोड़ा सा फॉरवर्ड आते हुए हल्का सा आप सांस छोड़ते फर्स्ट सांस इनहेल के साथ लिफ्ट करेंगे चेस्ट को अप, चिन लिफ्ट करते हुए एक्सहेल। ब्रेथ पे कंप्लीट फोकस, रिलीज, फुल होते हुए, नो स्ट्रेन,
इस तरफ खिंचाव, तनाव, जो भी जड़ में खिंचाव है वो मसल्स की रिलैक्सेशन के लिए, स्टिफनेस रिलीज करने के लिए, अपने बैक शोल्डर्स मसल्स की वापस आएंगे। हाथों पर जाते हुए फिंगर्स को अपने आर्म्स के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए फिंगर्स ओपन एंड क्लोज टाइटली, फ्लो के साथ कंप्लीट ब्रेथ पे फोकस रखते हुए करेंगे। रिस्ट जेंटल ट्विस्टिंग के लिए रहेंगे। वन हैंड करेंगे अपने अपोजिट नी की तरफ, दूसरा हाथ रोटेट करते हुए चेयर पर रखना है, जितना हो सके स्टे। साथ रिपीट करेंगे अदर साइड। वापस सेंटर में सांस लेना ना भूलें। रोटेट करेंगे हाथों को गर्भासन। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रखना है, बैक को रिलैक्स रखना है, स्टिफनेस क्रिएट नहीं करनी, जेंटल पोस्चर में कंफर्टेबल रहते हैं। करते हैं लोअर बॉडी के नेक्स्ट दोनों हाथों से होल्ड करेंगे नील को। आप फिंगर्स लॉक करके भी रख सकते हैं नील के साथ। चार से 5 बार, देन होल्ड। Slowly exhale, come down and drop it. And then same leg, back, come in, chair position. From here, press, hold your feet, stretch, lift it up, keep your elbow on your away on the support of the chair. Press down towards the ground. Relax your spine. Breathes that over the way. Hold.
Slowly exhale down and then stretch. Restore the elbow. Slowly exhale back. Now for the whole body, stretch and relaxing gaze. Just go gently, just leave your body, go completely straight your back, and slowly with inhale, support and up. Hold your chair back, your fingers like this. Close your eyes. This will be the Shavasana of the chair. Surrender, slow, relax. Stay here for a minute, 3 or 5 or be comfortable. Slowly gently come back in your previous position. Deep breath in. Exhale. Stay for a while, just settle down. Join your palm. Express your gratitude to the universe for the blessing. The Om chanting 3 times. For a while, gently back and relax. Thank you.